उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं। हाँ रंजीता, अखिलेश जी से। हाँ, अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, अखिलेश जी से नहीं, मैं सवाल पहले जितनी भी चीजें कही वो तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या इंडिया गठबंधन का अपना कोई साझा जो है वो मैनिफेस्टो होगा? अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है, या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूँ जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। विक्रांत, और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। Well, several points there as far as today's press briefing is concerned. Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav joint press briefing that is now taking place. But as far as the question that has now been asked directly to Rahul Gandhi as to why is he not contesting from Varanasi or from Amethi, and why again from Wayanad, this is what he had to say. लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। All right, so clearly dismissing it and calling it as a BJP question as far as the direct question that was asked to Rahul Gandhi as to why he chose rather to contest from Wayanad again, and why even till today the CEC has been unable to decide who will contest from Amethi and who will contest from Raebareli, and why is that Rahul Gandhi is not choosing to directly counter the Prime Minister in the seat of Varanasi in Uttar Pradesh is here. Rahul Gandhi clearly dismissing it and calling it as a BJP question, also saying that this is the party CEC that will decide on who exactly will be contesting from what seat. But as far as the Congress party bastions that were once called, be it Amethi, be it Raebareli, of course, we've heard it from Union Minister Smriti Irani, who has given out an open challenge, saying that whoever is ready to contest from the seat of Amethi, whether it is Rahul Gandhi or anyone coming in from the Gandhi Parivar, it would be the BJP who would be winning squarely the seat of Amethi again. We have Mr. Tom Vatakan with us right now. Mr. Tom Vatakan, sir, good morning. Rahul Gandhi was asked pointedly, sir, why isn't he contesting from Varanasi, or so to say from Amethi, and why he chose to contest again from Wayanad. He calls it a BJP question, sir. Well, it's conscience that is pricking him. He realizes that
he will be defeated in North India. And even in South India, he is on thin ice. The reality is dawned on him. So naturally, the messenger is attacked. If the messenger who's asking a question, he charges him of being a BJP person. A journalist or somebody who does a job to inform the nation. And if they are called names and there's a partisan attitude by any leader, it's not acceptable. Right there, sir. All right, bad line, sir. We will just reconnect that line, but trying to get in as many reactions as possible, because why isn't Rahul Gandhi contesting from Amethi? Or is it going to be the same picture or scenario that played out in 2019, where he chose to contest from 2 seats, but right now he's already filed his Wayanad nomination, Amethi. Even when it comes to who would be the who would be the candidate, that is yet to be decided. Of course, in his own family, Robert Vadra has been pitching for himself, but still there seems what Rahul Gandhi says, that there is an undercurrent, not just for the Congress, but for the Indian bloc parties and allies as well, saying that this time around the BJP definitely would be defeated. But when it comes to keeping their allies together, their flock together, we've seen the Congress party that has been struggling in much of the states, like in Punjab, in Maharashtra, in Bihar, and even in Kerala. Kerala, even when it comes to the left, why it's allied nationally, but has been raising the question on Rahul Gandhi as to why he is choosing to contest from Wayanad and not from a seat there in North India. Those pictures that are now coming in, once famously known as UP ke ladke, previously when the assembly elections were held, of course, then both of the parties went apart. And here we are looking both of them coming together. Of course, they've had their fair share of issues and troubles and differences as well. But here is Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav putting up a united picture, united face, holding hands. Let's also listen in once again to the audio that is now coming in from that press briefing, the joint press briefing that is taking place. कुल का सम्मान तुम्ही हो, अब धर्म युद्ध को लड़ना है तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर। गठबंधन है, गठबंधन है,